you to read something, okay? Okay, what have I written? Turn off the engine. Turn off the So most people when they are given this they read turn off the engine, okay? ये मैंने लिखा इस तरह से है, मतलब अगर आप इसको बुक में देखेंगे, सही है? Because you're used long term, you're used to reading turn off the engine. Most people read turn off the engine. They skip this. What is the idea? The idea is, to cut the long story short, your long term learning and your short term learning affects what you select in and what you select out and how you assign meaning to it. In other words, we perceive what we want to perceive. We see and hear things what we want to see and hear. And what do we want to see and hear? What do we want to perceive? That is in line with our prior learning, both short term and long term. Okay? Abhi tak clear ho? With me? Now, why this is important? This is important. Let's say HR में एक important area है recruitment selection. Ever heard about it? Yes. Recruitment selection में एक instrumental tool है interviewing. ठीक है? आप एज एन ओबी पर्सन अगर लोगों को ट्रेन करेंगे इंटरव्यूइंग स्किल्स में, इट्स अ प्रॉपर टास्क, या आप खुद इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी, कि ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है? एवर हर्ड द टर्म फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? व्हाई? कभी सोचा है? लेट्स सपोज आप इंटरव्यू के लिए मेरे पास आई, फर्ज करें आप लेट थी, या फर्ज करें मैंने एकदम कोई आपने को बात की जो ठीक नो, मेरी प्रायर लर्निंग शॉर्ट टर्म लर्निंग में क्या हो गया कि आप ठीक नहीं है इस जॉब के लिए. नो इसके बाद जो भी आप बातें करेंगी उसमें से आई सेलेक्ट इन ओनली दोज थिंग दैट वुड कंफर्म माय प्रायर लर्निंग एंड सेलेक्ट आउट दैट वुड कन्फ्रंट माय प्रायर लर्निंग. It's a glitch, okay? You need to train people. Oh, be wary. This is ये गलत बात है. First impression is last impression. Maybe you're late, maybe कोई वजह हो सकती है, ठीक है? और आपको कोई पहला क्वेश्चन, उसके बाद you should be given a due chance. बी आपको खुद एक कॉन्शियस, जो उन्होंने बात की थी कि you have to consciously make an effort कि hang on, I should check myself. What am I selecting in? Am I giving the person? I think I conducted your interview if I'm not wrong. So some of us. Some of us. So this happened there as well, okay? I had a discussion about, because you have to teach human beings के साथ ये problem है, ठीक है? So somebody like you, I don't know, we all have same faces. So उसके साथ यही मसला, फिर people नहीं यार ये लेट तो, so everybody saying because वो लेट है तो बस मसला बाकी सब खराब है, ठीक है? So आपकी इंटरव्यूज में यू हैव टू मेक अ जेन्युइन एफर्ट कि जी आपकी प्रायर लर्निंग कहीं आपकी सब्सिक्वेंट परसेप्शन को कलर कर रही है या नहीं, ठीक है? ये तो हो गई शॉर्ट टर्म लर्निंग. लेट्स टेक लॉन्ग टर्म लर्निंग. आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप साथ साथ सीवी देख रहे हैं, ओके आप हसन अब्दाल के ग्रेजुएट, ओके IBA के, सो आपकी लॉन्ग टर्म प्रायर लर्निंग क्या है? दे आर गुड, अब्दालियंस आर गुड, और IBA का तो. So this long term again would color your perception. You select in only those things that would confirm your prior preconceived notion. इनको कहते हैं preconceived notion कि all Abdalians are brilliant, ठीक है? और all IBA people are brilliant, and select out which confront your preconceived notions. Okay? There is a famous guy called Harold Kelly. अगर आप लोग चाहें तो वो मैं study आपके लिए रखवा लूँगा. It's a short case. Harold Kelly conducted a study in MIT, very famous study. I'll write it down for you. I'll give it to you. मैं एक पेज किया है. आप CR मुझे रिमाइंड करवाना, मैं लिखवा दूंगा आपके लिए, ठीक है? MIT में उसने कहा, it's a very famous study. उसने कहा जी कि the experiment was I'm gonna bring in a guest lecture, ठीक है ना? अच्छा, गेस्ट लेक्चरर को बुलाने से पहले उसका एक इंट्रोडक्टरी कार्ड फ्लोट किया गया ना. वो इंट्रोडक्टरी कार्ड हाफ ऑफ क्लास को और था और दूसरों को और था, मतलब वो आइडेंटिकल था कि मिस्टर सो एंड सो डिड हिज बैचलर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर, डिड हिज मास्टर, हैज रिसर्च्ड इन दीज एरियाज एंड ब्ला ब्ला ब्ला.
ठीक है, but and he is considered rather reserve but competent in this thing, ठीक है. और दूसरे कार्ड में भी सब कुछ ये था बट rather reserve की जगह था very warm. सिर्फ 2 लफ्ज चेंज थे दोनों में, बाकी exactly the same. ये कार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया. लेक्चर के बाद जब जो रादर रिजर्व वालों से पूछा गया, द लेक्चर वाज ब्रिलियंट, ही वाज अमेजिंग गाय, बट ही वाज अ बिट कोल्ड, बिट रिजर्व्ड. And they said, well, good lecture, learned a lot, but and we found him very warm. सही है. इसको प्रेमिसी रिसर्च इसको कहते हैं आपकी प्रायर लर्निंग की. अच्छा, during this study, the people who received the very warm card were very forthcoming, were asking questions and engaging the person in discussion, and the people who received the rather reserved card were reserved, didn't initiate discussion, didn't ask question. Okay. So again इसमें बहुत studies हैं, जैसे मैंने कहा क्योंकि मैं debate पे नहीं जाना चाहता, but the essence says that our perception is colored by our prior learning, short term and long term, and we can all fall trap to it. We should make conscious effort, okay, when you're learning a person कि यार okay, आपने पहले एक चीज़, एक image बना दिया एक बंदे के बारे में, you can be totally wrong. Your psyche would force you to just see those things that would confirm your prior image, a prior conceived notion, and or even long-term notions. ठीक है? So challenge them. यहाँ तक everybody is with me? Yes. Motivation. एक internal set factor में the second thing है कि जी आपकी motivation dictates to a large degree what do you select in, how do you select it. मोटिवेशन पे आज इंशाल्लाह होपफुली गॉड विलिंग विल स्टार्ट परसेप्शन ख़त्म करके मोटिवेशन पे हम डिस्कशन आज शुरू कर देंगे. आपके अंदर मोटिव्स होते हैं, 3 ब्रॉड टाइप के मोटिव्स होते हैं. अभी लिखो मत, जब मोटिवेशन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. प्राइमरी मोटिव्स होते हैं, ठीक है ना, जनरल और सेकेंडरी. प्राइमरी मोटिव्स आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, मतलब हंगर, थर्स्ट, सेक्स, ठीक है. अच्छा, आपकी इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड्स कि आप क्या सेलेक्टिविटी. अभी प्राइमरी मोटिव्स की बात कर रहा हूँ. लेट्स से इफ़ यू आर वेरी हंग्री तो यू आर वेरी रेडिली टू सेलेक्ट इन. थोड़ी सी भी कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है तो आप कहेंगे यार कुछ पका हुआ है, ठीक है. ये भी मैं प्राइमरी मोटिव पे हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो लुथन्स ने भी कवर की है, रॉबिन्स ने भी कवर की है, कि ड्यूरिंग द 40s जब अमेरिकन सोसाइटी में रिप्रेशन थी, सेक्सुअलिटी इतनी आम नहीं थी, इट वाज अ टैबू थिंग, ठीक है. तो सोसाइटी में ये चीज़ इतनी इनकरेज नहीं होती थी, ठीक है. तो चूँकि वो एक रिप्रेशन थी अंदर, प्राइमरी मोटिव पे हूँ अभी मैं, तो इवन अ स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ सेक्सुअलिटी मैगजीन में थोड़ी सी भी न्यूडिटी वुड रेडिली बी सेलेक्टेड इन, वो है कि हो रहा है, ठीक है. बट इन मॉडर्न डेज आई मीन सिंस इट बिकेम अ कॉमन प्लेस इन मैगजीन्स एंड टेलीविजन्स, तो अब वहाँ पे ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझी जाती. आई मीन यू वॉकिंग इन लंदन, वुमन इज वॉकिंग इन अ मिनी स्कर्ट, नोबडी लुक्स एट हर, ठीक है, इट्स अ कॉम. बट हमारे जाके तो खैर वो एक और मसला है. बट ये रिप्रेशन यहाँ पर है. आई मीन समबडी इज नोटिस दिस कैरेक्टर going around, I mean with ISI tattoo, everybody has seen it. I mean why? It's the big deal. But the thing is कि वो है कि चक्कर है. Internal motivation repressed societies में इस तरफ बहुत होती है. बहरहाल प्राइमरी छोड़ें, सेकेंडरी मोटिव्स में आपका पावर मोटिव है, आपका अचीवमेंट मोटिव है, आपका अफिलिएशन मोटिव है, ठीक है, अफेक्शन मोटिव है. ये मोटिव सब में होते हैं, ठीक है, बट डिग्रीज वेरी करती हैं. कुछ लोग हाई ऑन अचीवमेंट मोटिव होते हैं, कुछ लोग हाई ऑन अफिलिएशन मोटिव होते हैं, बट होते सब में, ठीक. सो अब लेट्स से अ पर्सन हाई ऑन अफिलिएशन मोटिव, can I use you as an example? So if she goes in an organization because of her if वहाँ पे लोग everybody is in their burg and people don't talk to each other that much, she would immediately select in because of her internal drive कि यार बड़ी cold सी जगह है, people didn't talk. मैं lunch पे गई तो everybody was having lunch, nobody talked to me. While another person, okay, let's say high on achievement motive or power, won't even select that in कि यार lunch के time कोई बात कर रहा था या नहीं कर रहा था, ठीक. So again motivation, again I won't go into depth, but your internal motivation also, your motives, okay, your drives, primary, general, secondary,
also dictate what you select in and what you don't select out in. ठीक है? What crosses the threshold of your consciousness and what does not. Clear? जागो भाई. Yes, sir. So internal set factors में learning, prior learning to be precise, motivation and then personality. Again personality, I said OB जब full course होता है तो I dedicate at least 2 full sessions to personality. Personality एक समंदर है, उसको समझना है पूरा है. But हर पर्सनैलिटी, उसके फॉर्मेटिव ईयर्स, आपके जीन्स जो आपने बात की थी, आपकी ब्रॉट अप, ये अफेक्ट करती है कि आप किस चीज़ को सेलेक्ट इन करते हैं और किस चीज़ को नहीं. ठीक है ना? अगेन इट्स अ ह्यूज एरिया. आई मीन द एग्जांपल ऑफ द जब मैं परसेप्चुअल सब प्रोसेसेस समझा रहा था तो जो एग्जांपल ऑफ एग्जामिनेशन हॉल थी कि जी इंटरनल फीडबैक, ठीक है, जो सेकेंडरी प्रोसेस है वंस उसमें वन पर्सन हु हैड हाई ऑन सेल्फ इस्टीम, जिसको फॉर्मेटिव ईयर्स में अथॉरिटी फिगर्स ने बड़ा प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, कॉन्फिडेंट है, वुड नॉट सेलेक्ट इन के यार ये असाइन द मीनिंग, ठीक है ना, कि जी रेज्ड आईब्रो का मतलब है. बट अनदर पर्सन माइट नॉट हैड दैट गुड एन एक्सपीरियंस विद अथॉरिटी फिगर वुड बी सेलेक्टिंग दैट इन. सही है. Suffice to say at this stage is that we need to have certain generalizations. ये दो जनरलाइजेशन जो आई थिंक पिछली दफ़ा पहले भी मैं डिस्कस कर सका हूँ. देर आर डिफरिंग जनरेशनल परसेप्शन एज, ठीक है ना. हर एज ग्रुप की अपनी परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी होती है और हर जेंडर की दो ही जेंडर्स की अपनी परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी होती है. अगेन मैं इसकी बात को रिपीट करूँगा. आई डिस्कस्ड इट इन द फर्स्ट हाफ. This is important. Only the awareness of this, ठीक है ना, awareness of this goes a long way in understanding conflict management and resolution. ठीक. I mean, I don't see movies of late. I don't have that much time, and probably they are making pathetic movies. Anyways, when I was growing up, I saw this Bollywood का उस ज़माने में craze था. I saw this movie आखिरी रास्ता अमिताभ बच्चन की. Anybody has seen that? अच्छा, उसमें I mean there was two अमिताभ बच्चन डबल रोल. there's an old guy, जो एक बाप होता है उसकी बीवी को मार दिया जाता है तो वो बदला लेने पे उसका एक बेटा होता है, वो भी अमिताभ बच्चन होता है, वो पुलिस ऑफिसर होता है और उनका आपस में क्लैश होता है. ठीक है. so there's an amazing scene in that movie where वो अपनी वाइफ की ग्रेवयार्ड पे जाता है और उसी टाइम दूसरा अमिताभ बच्चन वो भी अपनी मदर की, अब वो दोनों क्लैशिंग पार्टीज है. इट्स एन अमेजिंग मूवी बट द सीन वाज अमेजिंग. सो वो उसको कहता है कि आप पिताजी ये जो अब कानून के हवाले वो अपना बदला ले रहा है. ठीक है. सो ही डज एन अमेजिंग थिंग. दैट वाज एन अमेजिंग सीन. आई थिंक आई वाज 18 or 17 बट आई वाज लाइक बैफल्ड. ही गोज ओके, ये इस तरह से कहता है बेटा तुम्हें क्या नज़र आ रहा है. ठीक है. वो कहता है 9. कहता है जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहाँ से तो 6 है. The point is that these two people are seeing things from different vintage points, but both are correct. Generations. Thomas Hardy कहता है there's nothing more tragic than the silence between two generations. Okay? It is very much possible that the different age perception, different generations have different perceptions about things, but they can both be right from where they are seeing things. So even my experience, even in this organization, people are like, अब साहब यार कोई ख्याल नहीं, कोई रूल्स का ख्याल नहीं, कोई अजीब रैश आदमी है, क्लास में पढ़ाते हैं बस, उसके अलावा इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं, रूल्स रेगुलेशन. So this is their thing. ठीक है. So I was like, यार these old people, dinosaurs, red tapeism, क्या bureaucracy, fine shine, खत्म करो, बच्चे पढ़ने आए. But both can be right. They are seeing things from their perspective. I am seeing things from their perspective, my perspective. But of course, sometimes rules, regulations, bureaucracy, it's important. Okay, I should understand, and they should understand similarly, which is an uphill task. That sometimes, I mean, you should let go of the rules and let people be. Okay, rules लोगों को facilitate करने के लिए है. I mean, what can I say? I mean, this guy is trying to be fancy, so let him be. As long as he's learning. As long as he's learning. I don't care. ठीक है? But the thing is, so this is different gender, different age, gender, different perceptions,
सोशियोलॉजी का टॉपिक है, थोड़ा सा थॉर्नी एरिया, आई डोंट वांट टू गो इन देयर. Why it's included? Because today we're living in diverse organization. Diversity समझते हो? Different ethnic groups, male, females, equal, ठीक है? So इसके बारे में sensitization ज़रूरी है. बहुत सी बातें male से male don't even perceive, but women do select in कि ये बात हुई है. ठीक है? सबसे important चीज़ क्या? You go to some social gathering, and if a woman sees another woman wearing the same dress, she readily selected. उसने तो यही कपड़े पहने हैं, ठीक है? बंदे को समझिए, हालांकि सारे बंदों ने एक जैसे पहने हैं. There are things that women don't even select in, but men select in like that. You all know what I'm saying. Again, at this point, it's important to be sensitized that modern organizations are diverse organizations. Why I'm saying it? Modern organization में harassment, occupation पे लोगों पे unethical behavior, ठीक है, can cost an organization a lot in terms of reputation and everything. Be very much sensitized, and it's your as future HR managers, if you go to sensitize people कि listen, बात सुने, आप बेंटर दो बंदे अपने शुगल में को बात कर रहे होंगे, it might be selected in and perceived in as insulting, derogatory, or as harassing, ठीक है? So you need to sensitize people कि जी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो behavior, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? And sometimes women need to be sensitized कि you might say something which men might consider as inappropriate or not job related. So at this stage, this sensitization and awareness raising is of critical, especially in our society. I mean, you'd be amazed how people behave in organizations. Right, ji, clear? So we're done with the selectivity principle. The next principle I'm going to touch upon is called the closure principle. ये Gestalt का principle है.